लेक्चर में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नए टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट कम्स आउट टू बी इट इज, इसका मीनिंग होता है डी अपॉन डी एक्स। शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशिएट। इफ दिस हैज बीन रिटन, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मीनिंग हो गया डी अपॉन डी वाई। नाउ दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ सिंपल डिफरेंशिएशन आपने क्लास +2 के सिलेबस में कर रखी है। मैं उसके ऊपर सीधा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log secant e dx square, then dy by dx is equal to, this is 2x tan of e dx square into x square, 2x e dx square secant e dx square. C option we have, B option is 2x e dx square secant x square tan also e dx square. C option is x square e dx square tan of ex square. D e dx square tan of ex square. Now dy by dx is equal to, चेन रूल से log x का होगा 1/x, that means 1 upon secant e dx square. D by dx is secant e the power x square, 1 upon secant e dx square, secant आपका आएगा secant e dx square tan of e dx square, this is d upon dx upon e dx square. Secant x square will be cancelled out. We are left with e dx square into e dx square into 2x. So the right option is 2x e dx square into tan e dx square. A part is the right option. Now next question number 2 is, next question we can say it is y is equal to x into x square plus a square log x plus x square plus a square. Then dy by dx is equal to, A option is x square plus a square, B 2x square plus a square, C x square plus a square upon 2, D it is 1 upon 2 into x square plus a square. These are the 4 options we have been given out. Now we have to calculate, we have to find out dy by dx. dy by dx कैसे निकालना है हमने? It comes out to be dy by dx, this is प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x into half x square plus ax square minus half into 2x plus square root of ax square plus a square. मैंने इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, कीपिंग इट x आउटसाइड, इसको डिफरेंशिएशन किया. नाउ कीपिंग दिस वन आउटसाइड, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस a स्क्वायर इज कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, d by dx of x plus square root of x square plus a square. This 2 and 2 will be cancelled out and this is equal to x square upon square root of x square plus a square plus square root of x square plus a square plus a square upon x plus square x upon x plus square root of x square plus a square. This is 1 by 2 into x square plus a square the power minus half into 2x.
This 2 and 2 will be cancelled out. We are left with x square upon square root of x square plus a square plus x square plus a square square root plus a square upon x plus square root of x square plus a square 1 plus x upon square root of x square plus a square. Now we take the LCM. Here only अभी हम यहीं पर LCM ले रहे हैं x square upon square root of x square plus a square plus x square plus a square upon x plus x square plus a square. This is equal to x square plus a square plus x upon square root of x square plus a square. This will be cancelled out. Now we are left with what? We are left with this one. So I just rub this question and I do write down the answers. Say, यहाँ पे I just take the LCM. It is x square plus a square. This is equal to what? This is x square. This is dy by dx is equal to. This is x square plus a square plus this comes out to be this is a square. This can be written as 2x square plus a square whole upon square root of x square plus a square, and this is 2x square plus a square. So the right option is B part. Now the next question is, if y equal to x the power y, then dy by dx is equal to A option we have been given out y square upon x into 1 plus log y. B option is y square upon x 1 minus log y. C option y upon x square into 1 plus log y. D y upon x square into 1 minus log of y. Then it comes out to be taking log. Log of y is equal to y log x. Differentiate with respect to x. 1 upon y dy by dx. This is y into 1 over x plus log x into dy by dx. पहले हमने log लिया because function the power function given था. अब हमने क्या लिया? log लेके we differentiate it. And then अब क्या करेंगे? dy by dx वाली terms एक तरफ इकट्ठी कर लेंगे. 1 over y minus log y into dy by dx. This is equal to y upon x. 1 minus y log x upon y dy by dx is equal to y upon x. I can say dy by dx is equal to, this is y square upon x into 1 minus y log x. That means now we have to see it where, but अब यदि हम चारों आंसर देखते हैं कहीं पर भी कुछ भी आंसर नहीं दे रखा हुआ, ना ए है ना बी है ना सी है ना डी है. इसका मतलब है इन क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, अपर रिजल्ट भी यूज होता है. दैट मीन्स दिस रिजल्ट विल बी यूज अगेन. इसको 1 ले लो. यूजिंग फर्स्ट, इस रिजल्ट को यूज करेंगे. dy by dx विल बी इक्वल टू, dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज y स्क्वायर अपॉन x. y log x is equal to log y. This is 1 minus log y. So our answer is y square upon x into 1 minus log y. B is the right option. X is equal to, next question, exponential. Tan inverse y minus x square upon x square. Then dy by dx is equal to A part
2x 1 plus tan of log x. B is, sorry, this is not complete. This is 2x 1 plus tan log x plus x secant square log x. B option we have, it is x 1 plus tan log x plus secant square log x. C option we have 2x 1 plus tan log x plus x square secant square log x. D, it is 2x 1 plus tan log x plus secant square log x. Now these four options have been given out. How we have to start it? हमें exponential का clearly meaning है, our question becomes e the power tan inverse y minus x square upon x square. यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं दे रखा कि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें. इसका मतलब अब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग log, it is log x is equal to log of e the power tan inverse y minus x square upon x square. This is log of x. This is tan inverse y minus x square upon x square into log of e. Log of e is equal to 1. Tan will come here. I can write down tan of log x. This is y minus x square upon x square. Or I can say x square into tan log x. This is y minus x square. And our question becomes, here our question becomes y is equal to x square 1 plus tan into log x. Now we find out dy by dx. It is x square into 1 plus secant square log x upon x plus 2x into 1 plus tan of log x. I can say, sorry, it is x square. इसमें ध्यान रखना 1 का differentiation it will become 0. It is 0 plus secant square log x upon x. And this x and x will be cancelled out. We are left with, it is x secant square log x plus 2x into 1 plus tan of log x. So this is the right answer, and that is the right option. It comes out to be, this is A part. जो next option, the next question हमें दिया रखा है, that is y is equal to cot inverse 1 plus sin x 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus 1 minus sin x. Then dy by dx is equal to half. A option, B option is 2 by 3, C option is 3, D none of these. So अब हम क्या करेंगे, we go for the easiest method. Easiest method is, आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से सबसे easiest रहेगा, इसको हम rationalize कर दें. इसे 2-3 मेथड से कर सकते हैं, बट आपके लिए शायद rationalizing सबसे easy रहेगा. 1 plus sin x plus 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus 1 minus sin x into square root of 1 plus sin x plus 1 minus sin x upon, it comes out to be 1 plus sin x plus 1 minus sin x. Y is equal to cot inverse A plus B the whole square 1 plus sin x plus 1 minus sin x plus 2 1 plus sin x 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus 1 plus sin x. This sin x and there 1 will be cancelled out. We are left with y is equal to cot inverse 2
1 plus, it is 1 minus sine square x, it is cos x, upon 2 into sin x. Now y is equal to cot inverse. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. Sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. 2 will be cancelled out. Y is equal to cot inverse. This becomes cot x by 2. Dy by dx, this is equal to, this is x by 2. Clearly dy by dx is half. The right option is A part. Next question है, if 2 the power x plus 2 the power y is equal to 2 the power x plus y, then dy by dx is equal to, it is A option, it is 2 the x plus 2 the power y upon 2 the x minus 2 the power y. B, 2 the x plus 2 the y upon 1 plus 2 the power x plus y 1 plus. C option is 2 the power x minus y 2 the power y minus 1, 1 minus 2 the power x. D option is 2 the power x plus y minus 2 the power x upon 2 the power y. Now these are the four options we have been given out. अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? We just differentiate it. It is 2 the x log of 2 plus 2 the power. We do write down differentiate 1. I name it. This is equation number 1. Differentiate equation number 1. Now we have to find out the dy by dx. So directly differentiate it. 2 the x log 2, 2 the y log 2, and this is 2 the power x plus y. यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2 the power y log 2, y का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, it becomes dy by dx. This is equal to 2 the power x plus y. This is log of 2 into 1 plus dy by dx. जब हम x का डिफरेंशिएट करेंगे तो we got it, it is 1, and y का डिफरेंशिएट आ जाएगा dy by dx. Now cancel log 2. Cancel log 2 in all, we got it 2 the x plus 2 the power y, it is log 2 into dy by dx. This is equal to, log 2 is eliminated in every term. This is 2 the power x dy by dx is equal to, it is 2 the power x plus y plus 2 the power x plus y into dy by dx. Now dy dx वाले टर्म एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, 2 the power y minus 2 the power x plus y. This is dy by dx 2 the power x plus y minus 2 the power x. Now we can say one thing, it is, यहाँ पे क्या आ जाएगा, it comes out to be, we can proceed it, it is dy by dx. It is 2 the power x common. I got it 2 the power y minus 1 upon, it is 2 the power y common, it is 1 minus 2 the power x. This is equal to 2 the power x minus 1, 2 the power y minus 1 upon 1 minus 2 the power x. The right option, it comes out to be C part. Then we are coming to next question. Y is equal to tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 upon x. Then y dash 0 is equal to, A option is 1, B is half, C is 0, D none of these. ये 4 options we have been given out. इसको कैसे करना है? It is put x is equal to tan theta. Put x is equal to tan theta. We got it what? It is y is equal to tan inverse 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. This is 1 of y is equal to tan inverse
secant theta minus 1 upon tan theta. Y is equal to tan inverse. We change into sine into cos. We got it 1 minus cos theta upon sin theta. This is y is equal to tan inverse. This is 2 sin square theta by 2 into 2 sin theta by 2 cos theta by 2. We got it 2 and 2 sin theta by 2 will be cancelled out. Y is equal to tan inverse. This is tan theta by 2. It becomes y is equal to theta by 2. Y is equal to 1 by 2. Theta here is equal to tan inverse x. Theta here equal to tan inverse x. And our question becomes y is equal to half into tan inverse x. Dy by dx. This is equal to 1 by 2 into 1 upon 1 plus x square. Now it is dy by dx at x is equal to 0 is 1 by 2 into 1 plus 0 square. It comes out to be 1 by 2. The right option is B part. Next question, if 1 minus x square plus 1 minus y square is equal to a into x minus y, then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to, four options given as, it comes out to be a part. It is 1 minus y square 1 minus x square, b 1 minus x square 1 minus y square, C option it is square root of 1 minus x square, and D option is 1 minus y square. Now it comes out to be put here. Now this question we got it. We take the question. It is square root of 1 minus x square plus 1 minus y square into ax minus y. Now again this is a unique question. अभी तक हम नॉर्मली जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे. बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंशिएट करने से या तो बहुत बड़े बन जाएंगे या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. सो द बेस्ट थिंग इज, उनके लिए कन्वीनियंट मेथड क्या है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा. पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई. वी मेक टू सब्स्टिट्यूशन. हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं. रूल क्या होता है, रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन इज if square root of a square minus x square, put x is equal to a sin theta. a square plus x square square root के अंदर है, put x is equal to a tan theta. x square minus a square है, put x is equal to a secant theta. This is the rule. Then it comes out to be 1 minus sin square theta plus 1 minus sin square phi a is equal to sin theta minus sin phi. This is square root of 1 minus sin square theta 1 minus sin square phi a sin theta minus a sin phi. This becomes cos theta plus cos phi is equal to a. हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे cos c minus cos sin c minus sin d. It becomes 2 cos theta plus phi by 2 sin theta minus phi by 2. This is 2 cos theta plus phi by 2 cos theta minus phi by 2. This is equal to 2a cos theta plus phi by 2 sin theta minus phi by 2. अब हम क्या करेंगे, it is cos theta plus phi by 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. This 2 and 2 will be cancelled out. We got it what, cot theta minus phi by 2 is equal to a. I can say theta minus phi by 2 is equal to
cot inverse A, it becomes theta minus phi is equal to 2 cot inverse A. See, I take cot over here, it becomes cot inverse A. थीटा की जगह बन जाएगा it is sin inverse x minus sin inverse y is equal to 2 cot inverse A. Now we differentiate it. Differentiate with respect to x. We got it 1 upon square root of 1 minus x square minus square root of 1 minus y square dy by dx is equal to 0. This is 1 minus x square is equal to square root of 1 minus y square dy by dx. Now dy by dx is equal to, this is 1 minus y square square root 1 minus x square. The right option is A part. We are continuing with the topic differentiation. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस इसकी प्रॉब्लम की थी, आज कुछ और प्रॉब्लम्स इसकी करने जा रहे हैं. आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है इफ 3 sin xy plus 4 cos xy is equal to 5, then dy by dx is equal to A part minus y over x b. This is b part. I do write down over here. It is 3 sin xy plus 4 cos xy upon, it is 3 cos xy minus 4 sin xy. This is a B option. C option is 3 cos xy plus 4 sin xy upon 4 cos xy minus 3 sin xy, and D option is none of these. Now इसे अब हम कैसे करेंगे, से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं. वी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन का बन जाएगा cos ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 4 cos एक्स वाई का बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एंड 5 का डिफरेंशिएशन इट कम्स आउट टू बी 0. This is 3 cos xy x dy by dx plus y into 1 minus 4 sin xy x dy by dx plus y is equal to 0. It comes out to be 3x cos xy dy by dx plus 3y cos xy minus 4x sin xy dy by dx minus 4y sin xy is equal to 0. Now keeping dy by dx terms on left hand side and another terms on the right hand side, we do it like this way. dy by dx वाली terms एक ये वाली है, एक ये वाली है, उसे हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं. 3x into cos of xy minus 4x sin xy into dy by dx. This is equal to, this term will go over here, it will become 3y minus 3y cos xy plus 4y sin xy. Now अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, we take this whole term in the denominator. I can say dy by dx is equal to, ऊपर में से y कॉमन ले लो, साइन वाली टर्म पहले लिख लो, y इंटू साइन 4 भी आएगा साथ में, y इंटू
y into 4 sin xy minus 3 cos xy upon, it comes out to be x, this comes out to be minus x common, we are left with, it is sin 4 sin xy minus 3 cos xy. We find out this whole term will be cancelled out and we are left with, this is minus y upon x. So the right option is A part. इसको हमने सिंपल डिफरेंशिएट किया, द ओनली थिंग इज यहाँ पर चेन रूल लग गया, एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशिएट किया एंड सेम इज हियर. देयर शुड नॉट बी एनी सिली मिस्टेक्स. डी वाई डी एक्स वाली दो टर्म थी उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था उसे राइट साइड पे उठा के ले गए एंड अल्टीमेट वी फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई ओवर एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fx is equal to log of x base x log x base x, then f dash x at x is equal to e is A part, this is 0, B part, this is E, C part 2e, D 1 over E. This is the question we have been given out. Now, how we proceed it? इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले we should know one thing. Log m base n, this is equal to log m upon log n. Base can be anything over here. It is, I do write down a even. इस केस में it becomes fx is equal to log of log x upon log of x. Base is anything and we can take it base as e also. So now we find out f dash x. अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे. तो u upon v क्वोशिएंट रूल लगा के, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? इट इज log of x d by dx of log of x. पहले आता v d by dx of u minus log of log x d by dx of log x upon, it comes out to be log x the whole square. F dash x is equal to log of x 1 upon log x, log of log x का 1 over log x d by dx of log x minus log of log x 1 over x, it is log x the whole square. This is log x will be cancelled out. 1 over x minus log of log x upon x upon log x the whole square. This is f dash x. Now we have to calculate what? We have to calculate, it is f dash x at x is equal to e. So अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? We find out f dash e. f dash e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? It comes out to be, it is 1 over e minus log of log e upon e upon log of e the whole square. Base जब कुछ नहीं मेंशन आउट किया तो we can take it base as e. It is 1 over e log of log e, it is log of 1. Log of 1 over 1, it is 1 the whole square. This is 1 over e minus 0. This is equal to 1 over e. So the right answer is D part. कैसे किया? The only important step is you should know one thing. क्या आपको पता होना चाहिए? Log m base n is equal to log m over log n. Base may be a, may be e. A it can be anything. So यहाँ पे convenient था तो I just took it base as e over here. Next question is y is equal to secant inverse root x plus 1 upon root x minus 1 plus sine inverse, this is root x minus 1 upon root x plus 1
then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to a into 0, b is 1, c minus 1, d it is minus 1. नाउ देखो, अब जो नॉर्मली हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डिफरेंशिएशन करते हैं, वी लुक फॉर कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी नो फार्मूला, वी नो sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. This is the first rule, we know it. Another rule is cos inverse x is equal to secant inverse 1 over x. So I can do it one thing, y, this y can be written as cos inverse root x minus 1 upon root x plus 1 plus sin inverse root x minus 1 upon root x plus 1. This becomes y is equal to cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. I can conclude dy by dx is equal to 0. I can conclude dy by dx is equal to 0. Next question है, fx is equal to x cube into sin x into cos x. 6 minus 1 into 0. P square into p cube, where p is constant, then d cube upon dx the whole cube, fx at x is equal to 0 is, this is a, p, b, p plus p square, p plus p cube and d independent of p. Now this determinant has been given out. जब डिटर्मिनेंट हमें गिवन है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वी नो दैट डिटर्मिनेंट में जो लगेगी, डिटर्मिनेंट को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का है, पहले हम फर्स्ट रो को करेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो को सेम रखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड रो को, फर्स्ट एंड थर्ड को सेम रखेंगे, देन विल डिफरेंशिएट थर्ड रो, फर्स्ट और सेकंड को सेम रखेंगे. सो इट इज एक्स क्यूब का बन गया 3x स्क्वायर, दिस इज cos x, इट इज माइनस sin x, और बाकी दोनों कॉलम्स, बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी, इट इज p स्क्वायर p क्यूब प्लस इट कम्स आउट टू बी x क्यूब sin x cos x, 0 0 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इट इज p स्क्वायर p क्यूब plus, because these all are constant, p is constant, 6 minus 1 0 are all constants, this is x cube sin x cos x, this is 6 minus 1 0 0 0 0, the value of this determinant, it comes out to be 0, this is also 0, so I find out f double dash x, this is equal to 6x minus sin x minus cos x, 6 minus 1 0, it is p square p cube plus 0 आ जाएगा. Same way से we have to find out triple derivative. I can say f triple dash x, this is equal to 6, it is minus cos x into sin x upon 6 minus 1 0, this is p square p cube. Say now we have been given this thing, अब हम क्या करेंगे, we can say हमें given है third derivative at x is equal to 0, so I can say f triple dash x at x is equal to 0 is क्या आ जाएगा, it is equal to 6, this is equal to 6 minus cos 0, it comes out to be minus 1, this is 0, it comes out to be 6 minus 1 0, this is p square p cube, so it comes out to be is equal to, this is f triple dash at x is equal to 0 and this is identical, I can say answer will come out to be 0, so answer is, will say it is independent of p. इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो, जब हम डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, द रूल इज या तो पहले कॉलम को करो, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को सेम रखो,
फिर सेकंड कॉलम को करो, फर्स्ट एंड थर्ड को सेम रखो, थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट एंड सेकंड रखो। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये किया जो मैंने अप्लाई किया, लुकिंग अपॉन द क्वेश्चन हमें डिसाइड करना पड़ता है। पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड एंड थर्ड को ऐसा रखा, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को सेम रख के सेकंड को डिफरेंशिएट, देन थर्ड को डिफरेंशिएट। अल्टीमेट वी फाइंड आउट दीज आर कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, इट मींस अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दीज टर्म्स विल बी जीरो। On again differentiating, I find out this one at x is equal to 0. At x is equal to 0, I find out this one 6 minus 1 0, 6 minus 1 0. Answer comes out to be 0. हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया रखा है, इट इज क्वेश्चन नंबर 34. y is equal to tan inverse log e into x the power minus 2 upon log of e into x square plus tan inverse 3 plus 2 log x upon 1 minus 6 log x, then d square y over dx square, मतलब we have to find out a double derivative, that is equal to d square y over dx square. This is equal to, it comes out to be a 2, b 1, c 0, d it comes out to be x. So it has been given, we have to find out it is double derivative. So आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो वी मोस्ट ऑफ टाइम्स वी गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. y इज इक्वल टू tan इनवर्स, this is log m into n, I can write down log of e plus log of x the power minus 2. This is log of e plus log of x square. It is tan inverse 3 plus 2 log x 1 minus 3 into 2 log x. It can be broken it like this way, 3 into 2 log x. Now there is one formula, we know that the formula is tan inverse x plus y 1 minus y. I can say this is equal to tan inverse x plus tan inverse y. So this can be written as it is tan inverse 3. This is tan inverse 3 plus tan inverse 2 log x. Tan inverse 3 plus tan inverse 2 log x. This is equal to y is equal to tan inverse. This is 1 minus 2 log x upon 1 plus 2 log x. Now this is a formula. Now I can say put 2 log x is equal to z. I can say it is equal to tan theta. So it will make tan inverse 1 minus tan theta 1 plus tan theta. This becomes plus tan inverse 3 plus tan inverse 2 log x. It can be written as tan inverse tan pi by 4 minus theta. It can be written as pi by 4 minus थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, इट इज tan इनवर्स 2 log x. पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स इट इज 2 log x प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x. I can say this is tan inverse 3 plus tan inverse 2 log x. Tan inverse 2 log x, tan inverse 2 log x will be cancelled out. dy by dx, it comes out to be 0. So answer, I will say dy by dx, this is equal to 0, which implies d square y upon dx square, this is also equal to 0. So question number 34 का the right option is C part. एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो. The question is, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमें गिवन था tan इनवर्स log e प्लस log x की पावर माइनस 2.
यहां पर इसको मैंने ब्रेकअप कर लिया 6 को 3 इंटू 2 लॉग एक्स. नाउ आई कैन से इट इज 1 माइनस 2 लॉग एक्स 1 प्लस 2 लॉग एक्स. फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस यहां पर मैंने 2 लॉग एक्स को tan थीटा पुट कर लिया. इसमें डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा दिया. आई गॉट इट tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x. It becomes tan pi by 4 minus theta pi by 4 minus tan inverse 2 log x plus tan inverse 3 plus tan inverse 2 log x. This term will be cancelled out. Now this is a constant, this is a constant. Differentiation of a constant is always 0. And double derivative also comes out to be 0. So the right option is C part. 35th question. हमारे बुकलेट का 35th क्वेश्चन है. इट इज क्वेश्चन नंबर 35th. द क्वेश्चन इज tan inverse 1 upon 1 plus x plus xk plus tan inverse 1 upon x square plus 3x plus 3 plus tan inverse 1 upon x square plus 5x plus 7 plus it goes up to n terms. Then y dash 0 is equal to 4 options we have. It is A option is minus 1 upon n square plus 1, B minus n square upon n square plus 1, C n square upon n square plus 1, D option is none of these. ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है. हाउ वी प्रोसीड इट, इसको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हुए बड़े ध्यान से करना पड़ेगा. ऐसा एक क्वेश्चन मिलता जुलता हमारे पास उसमें भी आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. इसमें बेसिकली इसको हमें इस वे से लिखना होता है. दिस इज y इक्वल टू, हमें इसे मॉडिफाई करना है. कैसे मॉडिफाई करना है? दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स 1 plus x into it is x plus 1. I will do write down x plus 1 minus x. The important thing is the way it has been given out. I can write down x plus 1 minus x. Now it will come out to be same 1 over here. Now plus next वाला ऐसे करेंगे plus tan inverse. It comes out to be, this is x plus 2. It is x plus 2 minus x plus 1 upon 1 plus, it comes out to be x plus 1 into x plus 2. इसको ब्रेकअप करके लिख लिया x square plus 3x plus 2 like this way. Then plus next it comes out to be tan inverse x plus 3 minus x plus 2 upon 1 plus x plus 3 x plus 2. It goes up to the end. n वाला जाएगा. It becomes tan inverse x plus n minus x plus n minus 1 upon 1 plus x plus n into x plus n minus 1. Now I can say this is y equal to, I can write down this is tan inverse x plus 1 minus tan inverse x. Next wala I can write down it is tan inverse x plus 2 minus tan inverse x plus 1. The next expansion I can say it is tan inverse x plus 3 minus tan inverse x plus 2 and it goes up to tan inverse x plus n minus tan inverse x plus n minus 1. एक बार फिर इसको देख लो. यहां तक का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसको हमने ब्रेकअप किया. आई टुक इट x कॉमन x plus 1. It becomes x plus 1 minus 1. Now I can break it x square plus 3x plus 2 plus 1 और 2 तक के फैक्टर बन गए x plus 1 x plus 2. 1 की जगह हमने लिख लिया x plus 2 minus x plus 1. Same it can be written as x plus 3 x plus 2 x plus 3 minus x plus 2. Here it comes out to 1 and then it comes out to be last. Now we find out all terms will be cancelled out. This is x plus 1 will be cancelled out, x plus 2 will be cancelled out. It keeps on cancelling out and we are left with, it comes out to be, it is, हमारे पास जो term रह जाएगी, it comes out to be, this is
this is plus, this is tan inverse x plus n minus tan inverse x. इन बिटवीन सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x. Now I can say y is equal to tan inverse. This is x plus n minus x, 1 plus x into x plus n. This is equal to x and x will be cancelled out. This is equal to y is equal to this one. Tan inverse n upon 1 plus x square plus nx. Now we are just what we are going to do it over here. We are going to do a differentiation. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इस कोशिश रहेगी हम यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट हमें करने की कोशिश जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. It is 1 upon 1 plus x plus n the whole square into 1 minus 1 upon 1 plus x the whole square. Now हमें क्या निकालना है? It is dy by dx at x is equal to 0. dy by dx at x is equal to 0 is 1 upon 1 plus n square minus 1 upon 1 plus x square. This is x is again, it comes out to be 0 square. I can say this is 1 upon 1 plus n square minus 1 upon 1. 1 minus n square, 1 plus n square, it is minus n square upon 1 plus n square. The right answer is B part. Now, this is one of the important sum. कैसे हमने किया देखो, the important step is we break up in such a manner, it is 1 plus x into x plus 1. न्यूमरेटर में 1 की जगह हमने लिख लिया x plus 1 minus x. Now I can say it is x plus 2 minus x plus 1. This can be broken into 1 plus x plus 1 into x plus 2. Same way the last term I have written it tan inverse x plus n minus x plus n minus 1 upon 1 plus x plus n minus 1. Now this is tan inverse this minus this, second this minus this. We find out internally सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगी एक लास्ट में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इट इज ये वाली टर्म रह जाएगी एंड और एक पहली टर्म रह जाएगी tan इनवर्स x. इसका डिफरेंशिएट किया, x की जगह 0 पुट किया, I got it 1 upon 1 plus n square, it is minus n square upon 1 plus 1 upon n square. So B part is the right answer. Now I am coming to next question of differentiation. This is if x is equal to e the power y up to infinity, x is given to be greater than 0, then dy by dx is equal to a part x upon 1 plus x, b upon 1 plus x over x, c 1 minus x upon x, and d is 1 over x. Now I can say this thing I can write down e the power y plus e the power y plus e the power y up to infinity. This is e the power y plus x taking log. Log of e the power y plus x. Log x is equal to y plus x into log of e. यहाँ पर मैंने log लिया. Now I apply log m the power n. It comes out to be this one. I can say log x is equal to y plus x. Now we have to find out a dy by dx. 1 over x is equal to, this is equal to dy by dx plus 1. I can say dy by dx 1 over x minus 1, 1 minus x upon x. This is equal to dy by dx. So the right option is, it is C part. Now the next question is y is equal to tan inverse, it is 3a square x minus x cube upon, this is a cube minus 3ax square. Then dy by dx is equal to a is 3a square over a square plus x square.
B is 3a over a square plus x square. C is a upon a square plus x square. D is 3 upon a square plus x square. नाउ यहां पर क्लियरली tan 3 थीटा का फार्मूला लग रहा है. उसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब यहां पर 1 हो. तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यू. तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3. इट इज 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a द होल क्यूब 1 minus 3 x upon a the whole square. Put x upon a is equal to tan theta. Y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta. Y is equal to tan inverse, this is equal to tan 3 theta. Y is equal to 3 theta. Now 3 theta is what? It is y is equal to 3 tan inverse x upon a dy by dx. This is 3 upon 1 plus x square over a square. This is 3a square upon a square plus x square. This is 3a upon this one. So d by dx of यहाँ पे आएगा it is x upon a. This is 1 upon a over here. I can say this is 3a upon a square plus x square. The right option is B part. इसको हमने कैसे करना है देखो. 1 बनाने के लिए we divide numerator and denominator by a cube. a cube से divide किया, it becomes this form. Now I can say x over a is equal to tan theta. So it becomes 3 tan theta, it becomes tan 3 theta. And ये बन गया फार्मूला 3 थीटा का. यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी, it becomes 3 tan inverse x over a 3 upon x square over a square, x over a का दोबारा डिफरेंशिएट, I got it 3a over a square plus x square. This finishes your whole differentiation.